Hello friends, welcome to Knowledge Lectures. The topic for today's discussion is research design. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक नॉलेज लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन किस चीज को हम कहते हैं? रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? किस चीज को, किस तरीके के बनाए हुए डिजाइन को हम रिसर्च डिजाइन कहेंगे? किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके का डिजाइन होता है वो जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है? A research design is a conceptual structure within which a research is conducted. ये क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है जिसके अंतर्गत हमारी रिसर्च की जाती है, हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या चीज होती है? ब्लूप्रिंट कहते हैं एक ऐसे डिजाइन को, एक पैटर्न को जिसे हम फॉलो करते हैं आगे आने वाले काम में। तो ब्लूप्रिंट इट्स अ गाइड फॉर मेकिंग समथिंग। ब्लूप्रिंट, इसको नाम कहाँ से पड़ा ब्लूप्रिंट का? आर्किटेक्चर्स जो होते हैं अपनी डिजाइन जो करते हैं, वो घर का, बिल्डिंग्स का, किसी भी चीज का जो नक्शा बनाते हैं, वो जो इंक यूज करते हैं प्रिंट निकालने में, वो ब्लू कलर यूज करते हैं। ब्लू कलर की लाइंस वो ड्रॉ करते हैं फॉर मेकिंग अ कंस्ट्रक्शनल ड्राइंग। तो वहां से इस ब्लूप्रिंट का नाम पड़। हेलो, क्या होता है रिसर्च डिजाइन? किस चीज को हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन होता है एक तरीका होता है जिसके अंतर्गत हमारी रिसर्च की जाती है, हम अपनी रिसर्च कंडक्ट। पड़ा ब्लूप्रिंट का? आर्किटेक्चर्स जो होते हैं अपनी डिजाइन जो करते हैं, वो घर का, बिल्डिंग्स का, किसी भी चीज का जो नक्शा बनाते हैं, वो जो इंक, वहां पर भी मकसद यही था ब्लूप्रिंट का कि ऐसे ये चीज, ये जो उन्होंने नक्शा बनाया है, इस जो भी चीज उन्होंने बनाई है वो इस तरीके से बनाई जाएगी। तो वहीं से ब्लूप्रिंट का नाम पड़ गया है। तो हम रिसर्च डिजाइन को भी क्या कहते हैं? इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर आवर रिसर्च। ब्लूप्रिंट यानी कि हमें ये बताता है कि हमारी रिसर्च हम किस तरीके से करेंगे। तो इट कॉन्स्टिट्यूट द ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। हमें ये बताता है कि कैसे हमें अपना डेटा कलेक्ट करना है, कैसे उसे टेबुलर फॉर्म में डालना है, फिर उसे कैसे हम मेजर करेंगे और फाइनली कैसे एनालाइज करके अपना कंक्लूजन निकालेंगे। एक डायरेक्शन बताता है हमें रिसर्च डिजाइन। इट इंक्लूड्स एन आउटलाइन, एक आउटलाइन हमें देता है हमारे वर्क की। इट इंक्लूड्स एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द रिसर्चर विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथेसिस टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा। हमारे पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक हम क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, हमें क्या क्या करना है, उसका जो एक नक्शा हम बनाते हैं, उसका जो एक तरीका, उसको काम करने का जो एक तरीका, अपनी एक आउटलाइन तैयार करते हैं, जो एक डिजाइन बनाते हैं काम करने का, उसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। Research design actually does not tell us precisely regarding what to do. वो हमें ये नहीं बताता कि हमें करना क्या है। ये तो हमें पता चल गया जब हमने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, हमें उसी वक्त पता चल गया कि हमें करना क्या है। लेकिन ये बताता क्या है? इट सजेस्ट अस हाउ टू डू। अब हमने ये तो पता चल गया था प्रॉब्लम डिसाइड करते वक्त कि हमें करना क्या है। डिजाइन हमें बताता है कि हमें उस चीज
को कैसे करना है एंड व्हाट शुड बी द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, और हमारी एक्टिविटीज का फ्लो क्या होगा, यानी कि हम जो काम करने जा रहे हैं, जो हम अपना रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका तरीका क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे, वो सीक्वेंशियल स्टेप्स क्या होंगे, वो हमारा जो नक्शा होगा, वो जो हमारा डिजाइन होगा, उसी को हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। Though it's a framework or set of action plan, it cannot be rigid. ये भले ही हमारा एक एक्शन प्लान हो, लेकिन ये रिजिड नहीं होता, ये हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें काम करते वक्त लगता है कि हमें कोई चीज पहले और कोई चीज बाद में हम कर सकते हैं, या हम थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम रिसर्च डिजाइन में काम करने के साथ साथ वो चीजें अपनी सहूलत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज ओपन फॉर नेसेसरी अमेंडमेंट्स, हमेशा ये खुला रहता है अमेंडमेंट्स के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। ये नहीं है कि ये रिजिड नहीं होता, ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता कि हमें यही चीज फॉलो करनी है। ठीक है, हम रिसर्च करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें रिसर्च करने से पहले नहीं पता होती, हमने एक डिजाइन बना लिया, हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बना लिया कि हमें ये फॉलो करना है, लेकिन जब हम रिसर्च करने गए, फील्ड में उतरे, हमने काम करना शुरू किया, तो हमें लगा कि हम थोड़ा सा अपना प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, हम अपना काम करने का तरीका चेंज कर सकते हैं, तो हम अपने डिजाइन में चेंजेस ला सकते हैं। ये इतना रिजिड नहीं होता कि हम इसमें एक बार बन गया तो हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, हम इसमें जब चाहें फौरन उसमें चेंज करके अपना प्लान ऑफ एक्शन चेंज कर सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज ओपन फॉर नेसेसरी अमेंडमेंट्स। Then what are the features of a good research design? एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। सबसे पहली बात ये हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए जब हम रिसर्च डिजाइन बना रहे हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो किस तरीके की प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम रिसर्च करने जा रहे हैं। तो रिसर्च डिजाइन का हमारा नेचर क्या है, हम कौन सी रिसर्च कौन से टाइप की रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका क्या नेचर है, ये चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रॉब्लम्स टू बी स्टडीड। अब वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो गोल्स क्या हैं हमारे, जिनको हमें अचीव करना है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर ली, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है अपनी रिसर्च करके, वो कौन से गोल्स हैं, टारगेट्स हैं जो हमें अपने अचीव करने हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए रिसर्च डिजाइन बनाते हुए। थर्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी फॉर द रिसर्च वर्क। हमारे रिसर्च में कितना टाइम लगने वाला है, हम कितने टाइम फ्रेमवर्क में अपनी रिसर्च पूरी कर लेंगे, कि हमारा डेटा कलेक्शन में कितना टाइम लगेगा, फिर उसको टेबुलेशन में कितना टाइम लगेगा, फिर एनालाइज करने में कितना टाइम लगेगा, और हमारे पास कितना टाइम है, हमें कितने टाइम पीरियड में रिसर्च पूरी करके देनी है। जब हम किसी फर्म के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी इंटरप्राइज के लिए या गवर्नमेंट के लिए रिसर्च करते हैं, तो हमें टाइम बताया जाता है कि हमें इतने टाइम के अंदर अपना रिसर्च पूरी कर देनी है, और कितना मनी इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियसली हम यहाँ अपने घर बैठे बैठे तो हमारी रिसर्च होगी नहीं, हम बाहर निकलेंगे, जाएंगे, अलग अलग एरियाज में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हमारा टाइम भी लगेगा, हमारा पैसा भी लगेगा। तो कितना पैसा और हमारा लगेगा, एंड दैट शुड बी इकोनॉमिकल। हम कितने कम से कम पैसा खर्च करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें एनालाइज करनी होती है, और ये सब चीजें हम मेंशन करते हैं रिसर्च डिजाइन में। Then the means for obtaining information, वो क्या क्या तरीके हमारे पास अवेलेबल है कि जिन तरीकों से हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जैसे कि अभी हम लोग पहले भी डिस्कस किया कि हम फोन के थ्रू करेंगे, हम पर्सनली जाके कर सकते हैं, हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हम बहुत दूर की रिसर्च होती है, सपोज हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं, हमें किसी फॉरेन कंट्री में के बारे में रिसर्च करनी है, तो ज्यादा अच्छा मेथड ये रहता है कि हम ईमेल पे लोगों से फॉर्म भरवाएं, और वहां के लोगों से, क्योंकि हमारा बार बार जाना पॉसिबल नहीं है। या अपना हम इंडिया में ही एक कोने में बैठे हुए हैं, नॉर्थ में बैठे हैं, हमें साउथ में रिसर्च करनी है, या हम जो है हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा, ठीक है हमें जाना तो पड़ेगा ही, जाके लोगों से मिलना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है बार बार जाना पॉसिबल ना हो, तो ऐसे टाइम पर, ऐसे सिचुएशन में ईमेल से रिसर्च करना ज्यादा आसान होता है, ईमेल के थ्रू फॉर्म भरवाना ज्यादा आसान होता है।
या फिर हम टेलीफोनिक, हम किसी से फोन पे बात करें, उनसे क्वेश्चन पूछते रहे, वो आंसर करते रहे, हम अपना वो चीज नोट डाउन करते रहे। तो मीन्स क्या होगा, हमें खुद जाना होगा, हमें ईमेल के थ्रू करना है, फोन के थ्रू करना है, पर्सनली मिलके करना है, वो क्या तरीके होंगे जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना है। एंड एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द रिसर्चर एंड हिज स्टाफ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज है, जितना अच्छी हमारी टीम होगी उतना अच्छा हमारा डेटा कलेक्ट होगा। रिसर्च हमारी है, समझ हम रहे हैं, प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, तो हमें अपनी टीम मेंबर्स भी ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को उतना ही समझे, जिन्हें उस प्रॉब्लम के बारे में उतनी ही नॉलेज हो, तभी वो हमारा डेटा प्रॉपरली कलेक्ट कर पाएंगे। तो जितनी अच्छी हमारी टीम होगी, जितने अच्छे हमारे टीम मेंबर्स को नॉलेज होगी हमारे प्रॉब्लम के बारे में, उतना ही अच्छा डेटा कलेक्ट होके हमारे पास आएगा। तो जब ये सारी चीजें हमारे साथ प्रॉपर हुई तो हमारा रिसर्च डिजाइन बहुत अच्छा बनके तैयार होगा, और फाइनली हम अपना एक रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज उसके बारे में भी जरूर लिखें। I hope students you got a summarized knowledge about the research design. Now we will go ahead. We will see what are the basic principles of experimental design. There are three basic principles of their experimental designs which are proposed by Professor Fisher. The first principle is replication, second is randomization, and third is local control. So we will see in short what are these three principles. So the first principle, that is replication. The name itself is telling you replication means it should be get repeated many a time. So the experiment which you are doing, it must be repeated more than once. More than once, actually, in reality, in science, at least one experiment must be carried out in triplicate. So minimum 3 times you must do it, but it's always better if you repeat it more than even 3, 6 or 7 times. But as you all know that the time is the main constraint, so at least minimum 3 times you must repeat your experiment. And why we need to do this? Because by repeating this experiment, these experiments, the results which you are going to get will increase the statistical accuracy. So it will increase the accuracy of those results, and that's why this replication or repetition of the result is very, very important. Now, for example, uh, we are examining the effect of two varieties of rice, right? And for this purpose, what we did that there is a field which we have divided into two parts. In one part, we are going to grow one variety, and in other part, we are going to grow another one. But then when you want to draw some conclusion about it, it is just done once, right? And you may not be able to draw the correct conclusion on the basis of this experiment. But if the same experiment you do in this way, that you apply the principle of replication in this, so take the field, divide into several parts, or take the field, divide it into two part, and that two part again divide into several parts, and grow one variety into half of this part and another variety into the remaining part. And then as it is the replication, right? So in one part itself you are growing both the varieties by taking small sections of both the varieties in a repeated manner. So if you could do that, then definitely whatever result you are going to get, those are very reliable, and you can compare well between the two varieties and can draw conclusion correctly. So that's why this replication is very important. Then next is as I said, that you can repeat those experiments not only thrice but more than that. As much as you repeat,
you will find out the errors and you could able to get more accurate results. But always remember that doing, as I said, that it is not always easy to do the replication, but minimum 3 times you should do it. And always you should remember that replication is introduced to increase the accuracy with which the main effects and interactions on which you are working can be estimated. Then the next is the principle of randomization. Now this provides the protection that when we conduct an experiment against the effect of extraneous factor by randomization. Extraneous factor, if you remember, we are considering it as an experimental error. So you, by doing randomization, in short, I can say that you can reduce the experimental error. So we should design or plan the experiment in such a way that the variations which are caused by extraneous factors should be by chance. It should not be like it is obvious and it is going to happen. No, it should be like it is by chance it is happening, right? So when this is the case, then this can be done only and only by taking consideration as a randomization design. So for example, if we grow one variety of rice and say that the first of half part of the field will be grown for the variety 1 and the next half part will be for variety 2. Now, it is very much possible that whenever you are dividing a field into two halves, soil fertility may vary. You all know that the fields are of acres, the 10-acre, 20-acre field is there. And if you are taking 10-acre for first half and next 10-acre for next half, definitely the soil fertility may different. And this soil fertility here is an extraneous factor, right? So if this is the scenario, whatever results you're going to get, those are not correct because there will be an experimental error and that error will be too big. So if you want the realistic results, for that, what you have to do, take the different varieties of rice, take these two varieties of the rice and just randomly sow them in such a way that everywhere all these varieties will be there, and then randomly pick the samples and find out what are the differences between these two varieties. So it will reduce the chance of soil fertility differences which were there in your first experiment. And that's why this randomization is very important, and application of this randomization principle have always a better estimate of the experimental error. So because it will reduce your experimental error. Then the last one, that is the principle of local control. Now in this, it is also an important principle when you are doing the experimental design. Now here, this extraneous factor, which you can say that it is experimental error, is the known source of variability, and you have to make your experimental plan in such a way that this extraneous factor vary deliberately over a wide range of necessary needs, and it should be in such a way that variation, it should be in such a way that you could able to measure it. So you have to increase the extraneous factors variability in such a way that it is as good as control. So once it reaches to the level of largest variation, at that time you can just take it as a control and you can delete or nullify whatever experimental or whatever variation is getting measured from your treatment, right? So for example, first divide the field into several homogeneous parts. Take the field, divide it into the same part, right? Which you name as a, suppose you have taken a 10-acre field you are having, divide it into 6 parts, right? And this each part is equally you have to divide, and to this each part you have to give equal number of treatments. Then again
So you have taken a field which is of 10 acre. You have divided that field into 6 parts, right? In first part, you are going to give 3 treatments. In second part, again 3 treatment. In third part, 3. Fourth part, 3. Fifth part, 3 treatment. And sixth part, 3 treatment for each block, right? Now, when you are dividing it equally into several homogeneous parts, this process is called as blocking. And whenever this is done, you are fixing the extraneous factor fixed. So you are keeping that soil fertility is the extraneous factor here, and we have fixed it, right? Because everywhere that soil fertility problem is there, right? And you have fixed it because you have homogeneously divided the field, right? Now, whatever variability is there, it is because of treatment. Now, you are nullifying the effect of soil fertility. Because see, whenever you are treating a particular plant with particular treatment of fertilizer, then definitely it is going to give you some result, right? But the soil fertility may affect. Now, by doing this, you have just nullified the effect of soil fertility, and whatever results you're going to get, those are with of your treatment only. So in brief, you can say that by doing principle of local control, you can eliminate the variability which get caused because of extraneous factor from the experimental error. Fine. Now, there are important experimental designs which we are going to see. There are n number of experimental designs. We cannot take all the designs, but then these all designs are broadly classified into 2 broad categories. One is called as informal experimental design and other is called as formal experimental design. Now, informal experimental design are such designs which are less sophisticated form of analysis and which are based on differences in magnitude. Whereas formal experimental design offers relatively more controlled and more and use of more precise procedures of statistical analysis. So again, these informal experimental design and formal experimental design are divided into subparts. Informal experimental design is divided into the first one, before and after without control design. Second, after only with control design. Third, before and after with control design. I know you are not going to get anything right now, but slowly you will understand it as we see them all in brief. Then the next is informal experimental design. It is completely randomized design. The short form is CR design. Randomized block design, the short form is RB design. Latin square design, it is also called as LS design, and the factorial design. So for now, we will stop it here. And in the next lecture, we are going to see in short about the details of all these 3 informal and 4 formal experimental design. Till that, take care. Bye-bye.